Welcome back, students. This is our part 6 video. And today we will learn about the for loop. Okay, for next loop. Okay, so from page number 125. Everyone open your book and concentrate on that topic. Okay, for next loop. Just it is just like while loop. Okay, फोर लूप जस्ट लाइक वाइल लूप। जैसे हम लोग वर्क करते थे वाइल लूप में, सेम एज हम लोग वर्क करेंगे फोर लूप में, बट इट सिंटैक्स समथिंग डिफरेंट। व्हाट इज द डिफरेंट इन द सिंटैक्स? लेट अस सी। आई एम ओपनिंग द विजुअल स्टूडियो। it will take few seconds to open this software. Okay, it has been opened and creating a new project and giving my application name, that is for loop. Okay, created. It will take few seconds to create a new project and you can see the syntax. Everyone concentrate on the book, page number 125. Here syntax is written for, then variable name equals to starting value, equals to start value. That means a starting value where from we wants to initialize, our variable. Okay, our variable to end value. ओके, सपोज आप लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टू इंड वैल्यू डैट मीन्स आवर लास्ट वैल्यू, ओके। And then step to value, step is the keyword to take the step for the loop. Okay, and then value, that means which step to, सपोज कीजिए कि स्टेप 1 स्टेप 2 जैसे हम लोग करते हैं, स्टेप वाइज हम लोग किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग स्टेप कहने का मतलब है कि कितना वन टाइम में उसे कितना स्टेप को पार करना है, 1 2 3 4 etc. ओके, सो कंसंट्रेट ऑन द स्क्रीन एंड आई एम रीडिजाइनिंग द प्रीवियस आपका क्या था, प्रीवियस image from page number 124. So taking the label name, okay, and a button, added a button and taking two text box, one more text box 2. And when you will add a text box, you can see the increase or decrease the width of your text. Okay, but when you can see one more triangle dot on the text box, you will have to click them and then choose multi-line. If you will done the check mark for multi-line, you can arrange your text box to multi-line by giving height and width according to you. So I am changing the label name, that is enter number. Okay, I have given the number and I am changing the font size of our controls or elements. Okay, changed, enter number. Okay, and increasing the size of button, changing the text of our button, that is run for loop. Okay, and doing the operation on this button by double clicking on the run for loop. Okay, and increasing the size of our coding window, and then I am giving 4. Okay, 4 x is the variable name, okay, for x is the variable name. Okay, equals to 0 to
2, then x, sorry, y, small y I want to write here, y, okay, step 1, okay, step 1, okay, and then text box 2 dot text box 2 dot text, not text, it will append, okay, append text, okay, x, okay, it will append the text x of x, okay. Next, text box 2 dot append vbcrlf, that will gives the new line crlf, okay, okay. And here I am declaring the variable that is dim x and y as integer, okay, declared, okay, declared. And then x is equals to, sorry, not x, y is equals to, okay, y is equals to text box 1 डॉट टेक्स्ट, ओके, ओके। अब देखिए, अगर सपोज कीजिए टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम जो वैल्यू देंगे, which value we will have to enter in the text box 1, it will stores that value in variable y, okay, and then x will be initialized from 0, and then I am increasing the x, not 0, from 1, okay, from 1 to y, मतलब x क्या होगा, अगर सपोज कीजिए कंसोल पर आप 5 डालें तो ये 1 to 5 रन करेगा, स्टेप 1 लिखा है इसलिए 1 ही चलेगा, मतलब 1 टाइम्स ही चलेगा ये, ठीक है। मतलब लूप आपका 5 टाइम्स, तो जितने टाइम्स तक हम जितने नंबर हम डालें उतने टाइम्स तक तो चलेगा ही। बट यहाँ पर स्टेप 1, दैट मीन्स 1, अगर सपोज 5 हम डालें तो x1 डिस्प्ले करेगा, एंड देन x2 भी डिस्प्ले करेगा, 3 2 4 5 तक आपका डिस्प्ले करेगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड आफ्टर रनिंग दिस प्रोग्राम, ओके। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ओके, it is running and I am giving the value 5 and click the run for loop, it is working, okay, it is working. So if we want to increase the step, that is 2, okay, 2, तो अब हम स्टेप 2 कर, दैट मीन्स ये 1 स्टेप ना चल करके 2 स्टेप चलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट किए, ठीक है, स्टार्ट, एंड देन आई एम गिविंग द ये वैल्यू 12, देन इट विल रन 3 5 7 9 and 11, it has been increased by step 2, मतलब डेट मीन्स व्हाट, जो वैल्यू हम 12 इनपुट किए हैं तो x आपका 1 से तो स्टार्ट किया है, बट 1 + 2 कर दिया, 2 स्टेप वो आगे बढ़ा, जैसे 2 स्टेप वो आगे बढ़ा वो 3 डिस्प्ले कर दिया, फिर 3 के बाद वो 2 स्टेप आगे बढ़ा तो 5 उससे मिला तो 5 वो डिस्प्ले कर दिया, फिर 5 के बाद वो 2 स्टेप आगे बढ़ा तो वो 7 डिस्प्ले किया, ठीक है। if I will increase the if I will do the value from initialize the value of x from 0, then it will run as from, I am giving the 12, then it will run from 0 plus 2, that is 2 4 6 8 10 12, okay, 0 2 4 6 8 10 and 12, okay। So लूप इसी टाइप से हम लोग फोर लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है, और कोई उस नॉट एनी एक्स्ट्रा इन द फोर लूप, ओके। सो you will have to write the keyword of for loop and then initialize the variable, second initialize the variable, third give the two keyword for loop, and then then y is the variable where last variable, y is the last variable where we wants to give the next terminate or give the ending value, okay, and then step
you can manage your step. Suppose if you will given the 5, then it will take 5 step according to your program. Okay, you can give any step value. Okay, step is the value here. In every within the for loop, within the for loop, you can see the shaded text. You can see on the on my screen, the shaded text is the statement of the for loop. Okay, and here white, the white color is the value of the for loop to initialize, and then uh, initialize, and it will go to 0 to y value, and then it will follow the step. You can give any step, that is 1 2 3 according to you. Okay, according to you. Okay, and thank you everyone. We will meet on next video. Okay, thank you.